गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने फॉर्मली ज्वाइन किया है मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, जो कि एक यूएस लेड इनिशिएटिव है। कॉपरेशन अमंग मेंबर्स एनहेंस करने के लिए, सप्लाई चेन जो है क्रिटिकल मिनरल्स की, उसको सिक्योर करने के लिए। तो इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है उसको जून 2023 में ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि चाइना, जो कि लगभग 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जो है उनको होल्ड करता है, उनके सप्लाई को होल्ड करता है, और 80% जो प्रोसेसिंग है क्रिटिकल मिनरल्स की वो भी होल्ड करता है। उसने जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस शुरू कर दिए थे क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो चाइना जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है क्रिटिकल मिनरल्स की उसको डोमिनेट कर रहा है, और चाइना जो है उसने इस मिनरल डोमिनेंस को वेपनाइज करना शुरू कर दिया है। चाइना ने कई बार एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स पर, और कोऑपरेशन की बजाय कोअर्जन के ऊपर जो है चाइना अपने फॉरेन रिलेशंस में क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है? अगस्त 2022 में यूएस और अदर 10 कंट्रीज़ ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसका नाम मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये एक ऐसा इंटरनेशनल अलायंस है जो कि इंश्योर करता है स्टेबल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ताकि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो सके। फोकस कर रहा है ये मिनरल्स और मेटल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके गोल्स क्या हैं? गोल्स ये हैं कि डाइवर्स, सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन जो है क्रिटिकल मिनरल्स की बनाई जा सके। तो ये इंश्योर कर रहा है कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग जो है क्रिटिकल मिनरल्स की, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट मिले। ठीक है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी ध्यान है मेंबर्स का। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें तो एक ग्रोइंग नीड फील हुई है सारी कंट्रीज़ को, खासकर कोविड के टाइम के बाद से, कि चाइना के ऊपर क्रिटिकल रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंस अपनी कम करनी होगी। तो इस नेटवर्क के अंडर जो ये MSFN नेटवर्क है, MSP का ही पार्ट है ये, और जो है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडो पैसिफिक रीजन और यूरोप की कंट्रीज़ के, वो सब इकट्ठे होकर जो हैं, चाहे वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हों, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज़ हों, जो मेंबर नेशंस की, वो सब अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और रेजिलियंस जो है मिनरल सप्लाई चेन्स की, उसको एनहांस करने के लिए इकट्ठे काम करेंगी। तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया भी जो है वो अपने जो है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को डाइवर्सिफाई और सिक्योर करना चाहता है। खासकर इंडिया अपने आप को लिथियम वैल्यू चेन में एक बड़ा प्लेयर जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। ये टॉपिक पॉलिटी के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीटिंग के बाद, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की मीटिंग के बाद, असम के सीएम ने जो है 52 रिकमेंडेशंस जो हैं जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी की जो है वो एक्सेप्ट कर ली हैं क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड से रिलेटेड जो थी। 15 की रिकमेंडेशंस जो हैं उनके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो तो सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है उसके लिए। तो पहले तो समझते हैं क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड है क्या। तो 1985 में MOS साइन किया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में, जिसके बाद 6 ईयर लॉन्ग एजिटेशन जो है वो ख़त्म हुआ था असम में, जो कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की एंट्री के अगेंस्ट चल रहा था। तो एग्रीमेंट 1985 में साइन हुआ जो असम अकॉर्ड्स। उसका जो क्लॉज 6 है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स देता है असामीज़ पीपल को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए अपना कल्चर, सोशल, लिंग्विस्टिक और जो है हेरिटेज आइडेंटिटी को। ठीक है, तो ये सेफगार्ड्स जो है कंसर्न्स एड्रेस कर रहे थे स्टेट की डेमोग्राफिक और कल्चरल इंटेग्रिटी को लेकर। तो बिप्लब शर्मा कमेटी इसमें कहाँ जो है आ गई। जुलाई 2019 में क्या हुआ कि होम मिनिस्ट्री ने 14 मेंबर कमेटी बनाई, रिटायर्ड असम हाई कोर्ट के के जो जस्टिस थे बिप्लब कुमार शर्मा जी, ताकि वो रिकमेंडेशंस दे सके कि कैसे क्लॉज 6 को हम असम अकॉर्ड के इम्प्लीमेंट करें। तो इस जो है कमेटी को कहा गया कि आप डिफ़ाइन करो असामीज़ पीपल हैं कौन, सबसे पहले तो, कि उनको किसको हम क्लॉज 6 का बेनिफिट दें। तो कमेटी ने फरवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, और इसमें कहा कि असामीज़ पीपल जो है वो हैं जो कि इंडिजिनस ट्राइबल हैं, या फिर इंडिजिनस कम्युनिटी से आते हैं असम की, या वो इंडियन सिटीजन्स जो रिसाइड कर रहे थे असम में 1951 से पहले। ठीक है, और या फिर उनके डिसेंडेंट्स थे। ठीक है, तो इंडिजिनस असामीज़ पीपल भी जो हैं वो, उनको भी असामीज़ पीपल के अंदर इंक्लूड किया गया है। और इस डेफिनेशन के बेसिस पर ही जो है रिजर्वेशन जो है असामीज़ पीपल को पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में, लोकल बॉडीज़ में और जॉब्स में दी जाएँ।
तो रिकमेंडेशन के अंदर 40 जो रिकमेंडेशंस है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आती है, 12 रिकमेंडेशंस जो है कंकरेंट लिस्ट के उसमें आएगी, और जो 15 रिकमेंडेशंस है वो पर्टिकुलरली जो है वो सेंटर के डोमेन में ही है। तो असम गवर्नमेंट ने 1951 की जो कट ऑफ डेट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, असामीज़ पीपल जो हैं जो 1951 से पहले थे वो ही हैं। फिर कुछ और भी रिकमेंडेशंस है, जैसे कि डेजिग्नेट करने को कहा है एरियाज़ को जो असामीज़ पीपल जो है सिर्फ वहीं वो ही ओन कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं लैंड वहाँ पर। एक 3 ईयर प्रोग्राम चलाने को कहा है जहाँ पर लैंड टाइटल्स जो हैं असामीज़ पीपल को जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। और सर्वे करने को कहा गया है रिवरन रीजन्स का। असामीज़ को जो है वो ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज रिटेन करने के लिए कहा गया है। सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्ट्स, रूल्स और ऑर्डर्स जो है असामीज़ और इंग्लिश में जो है वो पास हुआ करेंगे। एक काउंसिल बनाने को भी कहा गया है ताकि प्रिजर्व और प्रमोट की जा सके इंडिजिनस लैंग्वेजेस ऑफ असम को। असामीज़ को कंपलसरी सब्जेक्ट भी बनाने को कहा गया है सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। फिर कल्चरल हेरिटेज के लिए जो न्यू वैष्णवाइट मोनास्ट्रीज़ हैं सत्रास की, उसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाने को कहा गया है डेवलपमेंट ऑफ सत्रास के लिए। फिर एक मल्टीपर्पज़ कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस बनाने को कहा गया है हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जो ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं जो कि 6 शेड्यूल एरियाज़ हैं बेसिकली असम के, वहाँ पर वो खुद डिसाइड करेंगे कि क्या वो इन 52 रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं। कुछ और भी रिकमेंडेशंस हैं जिसको गवर्नमेंट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि वो मोस्टली सेंटर के डोमेन में भी आ जाती हैं, जैसे कि इंडर लाइन परमिट जो है सिस्टम लेकर आना आसाम में, जो अभी एग्जिस्ट करता है नागालैंड, अरुणाचल में, मणिपुर और मिजोरम में। फिर जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में गवर्नमेंट जॉब्स में, उसको भी जो लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर। तो ये यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव का ही पार्ट है। तो विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम जो है वो विमेन के लीडरशिप फ्रेमवर्क को डेवलप करना चाहता है ताकि इंस्टीट्यूशंस को जो है सपोर्ट किया जा सके कि वो अपनी जेंडर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस लेकर आएँ अपने इंस्टीट्यूशंस में। विमेन की लीडरशिप जो है स्पेस साइंसेज में उसको डेवलप करना, एक स्ट्रेटजिक लीडरशिप फ्रेमवर्क देना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की, और इनेबल किया जाएगा वर्क प्लेस कल्चर जो कि रिकॉग्नाइज करेगा फीमेल लीडर्स को। ओके, तो यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव क्या है? यूके और इंडिया का फ्लैगशिप बायलैटरल कोलैबोरेशन प्रोग्राम है जो 2006 से चल रहा है, ठीक है। इसको 3 फेजेज़ में 2006 से लेकर 2022 तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ये बायलैटरल रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन से रिलेटेड इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंफ्रासाउंड। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्कशॉप होल्ड कर रही है साइंटिस्ट के लिए कि कैसे वो इंफ्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो इंफ्रासाउंड क्या है? वो साउंड वेव्स जिनकी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी होती है, और ये प्रोड्यूस कब होते हैं? जब कोई मीटियोर पास होता है या स्टॉर्म आती है, या फिर जो ऑरोराज होते हैं नॉर्थ में, या फिर वॉल्केनो की इरप्शन होती है, अर्थक्वेक होती है, कई बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी ये निकलती है, ये जो इंफ्रासाउंड्स होती हैं। ये बहुत ही माइन्यूट चेंजेस जो हैं वो लेकर आती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। बहुत लंबे डिस्टेंस ये कवर कर लेती हैं विदाउट एनी लूजिंग स्टीम, ठीक है। तो जो CTBTO का जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके इन इंफ्रासाउंड का जो जब डिटेक्ट करता है तो उससे पता लग जाता है कि कहीं पर भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर हुआ है तो, ठीक है। तो इसके और भी यूजेस हैं, सिर्फ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को ही आप डिटेक्ट करने के लिए ही नहीं, बल्कि इसको बिल्डिंग्स की हेल्थ को चेक करना, उससे आपको पता लग जाएगा कि इंफ्रासोनिक वेव्स अगर पास हो पा रही हैं डेंस मटेरियल से, तो आप क्रैक्स और डिटेक्ट अदर डिफेक्ट्स को आप पकड़ सकते हो। एरोस्पेस में भी जो है एरोडायनामिक्स इंस्टेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट जो आप डिटेक्ट कर सकते हो। माइनिंग में कि ये डायनामाइट ब्लास्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा या नहीं, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ की ट्रैकिंग में खासकर मूवमेंट ऑफ वेल्स जो है उसको मॉनिटर करना, उसमें भी इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड जो है उन्होंने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन 2.0 जो है वो लॉन्च किया है। तो ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव इवेंट है जिसमें कि इनोवेशन और डिजिटल सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए कंपटीशन किया जा रहा है,
ताकि जो चैलेंजेस हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के उसको टैकल किया जा सके। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? डेवलपर्स, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री प्लेयर्स, ये सब इकट्ठे होकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंटेशन, यूनिफाइड डॉक्यूमेंटेशन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन, ये सब जो है चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए उसके लिए ये हैकेथॉन कंडक्ट की जा रही है। तो ULIP है क्या? एक डिजिटल गेटवे है जो इंडस्ट्री प्लेयर्स को अलाउ करता है कि वो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड डेटा सेट्स को गवर्नमेंट सिस्टम से जो है वो एक्सेस कर सकें, API बेस्ड इंटीग्रेशन कर सकें उसकी। तो एक नेशन वाइड सिंगल विंडो लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म देगा ये, एंड टू एंड विजिबिलिटी करके, और इंटीग्रेट की जाएगी जितनी भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट एजेंसीज के पास अक्रॉस द वैल्यू चेन। तो इससे होगा क्या? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होगा सभी लॉजिस्टिक स्टेक होल्डर्स को, और डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑप्टिमम हो जाएगी, क्योंकि उससे फिर हम आपका टाइम और कॉस्ट दोनों ही जो है बच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशिया पावर इंडेक्स। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का रैंक इस बार थर्ड आया है एनुअल एशिया पावर इंडेक्स में, जो कि ऑस्ट्रेलियन के थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट जो है वो लॉन्च करता है, जो रिलीज़ करता है सिंस 2018। तो इसमें 27 कंट्रीज़ जो हैं एशिया पैसिफिक, उनको इवेल्यूएट किया गया है। कौन से बेसिस पर? दो तरह के बेसिस यूज़ किए गए हैं, एक रिसोर्स और एक इन्फ्लुएंस बेस्ड डिटर्मिनेंट्स। तो रिसोर्स के कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक कैपेबिलिटी देखी जा रही है कंट्री की, GDP एट PPP लेवल्स, फिर कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंटरनल कैपेसिटी कैसी है स्टेट की स्टेबिलिटी को जो है वो थ्रेट्स को जो डिटर करने की, फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए ऊपर भी फॉरकास्ट हैं, उसको सबको रिसोर्स बेस्ड डिटर्मिनेंट्स में डाला गया है। अब इन्फ्लुएंस के कंटेक्स्ट में कैसे एक कंट्री की जो है वो कैपेसिटी है कि वो लीवरेज कर सकती है जो है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, अलायंसेस और पार्टनरशिप्स कैसी हैं, कंट्री की डिप्लोमेटिक रीच कितनी है, और इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को कितना शेप कर सकती है वो कंट्री, इन सबको इन्फ्लुएंस बेस्ड डिटर्मिनेंट्स में डाला गया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ताइवान स्ट्रेट। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैपनीज़ वॉरशिप क्रू जो है वो पहली बार क्रूज़ हुई है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करने के लिए ताइवान स्ट्रेट में। तो ये जो है ताइवान स्ट्रेट जो है इसको फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, और ये सेपरेट करता है आपके जो है ताइवान को और कॉन्टिनेंटल एशिया को। तो बिगेस्ट आइलैंड जो है ताइवान साइड में वो है पेंगू। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब भी ताइवान वॉर होगी तो सबसे पहले टारगेट जो है वो चाइना पेंगू आइलैंड्स को ही करेगा। ठीक है, तो ताइवान स्ट्रेट जो है वो क्रिटिकल कॉरिडोर कनेक्ट है, और वो कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ। तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट बेसिकली एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो दो लार्जर बॉडी ऑफ वाटर्स को कनेक्ट कर रहा होता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Mineral Security Finance Network. This topic is important for your international relations and economy section. So India has recently joined the Mineral Security Finance Network, which is a US-led initiative, and it is focused on enhancing cooperation among members to secure supply chains for critical minerals. India has already joined the Mineral Security Partnership in June 2023, which was also launched by the US in 2022. So, what is the need of joining such frameworks? So, lately it has been realized that China is using restrictions on critical minerals in the name of national security. And China, we all know that it dominates the global supply chain for critical minerals. It controls about 60% of rare earth and critical minerals production and 80% of their processing. Okay, China has previously weaponized its mineral dominance, and it imposed certain export restrictions on critical minerals, and this is basically marking a departure from cooperation to coercion in China's foreign relations. So, realizing the threat, the Mineral Security Partnership was launched by the US in 2022 along with 10 other nations, and this was called the Mineral Security Partnership, and it is an international alliance that aims to ensure a stable supply of critical minerals for a clean energy transition. It focuses on minerals and metals which are essential for clean energy technologies. Okay, so the goals of MSP include
creation of diverse, sustainable, and responsible supply chains for critical minerals. This MSP also aims to ensure that the production, processing, and recycling of critical minerals support economic development. The MSP's members also work to promote shared prosperity. Okay, so what is Mineral Security Finance Network? So the creation of MSFN reflects a growing need to reduce dependence on countries like China for critical resources. So, this network basically aims to bring together institutions from the Indo Pacific region and Europe. And under this, the development finance institutions and export credit agencies from the member nations, they will work together to enhance production capacity and resilience in mineral supply chains. Okay, so India is also participating in this initiative, and it is aimed to diversify and secure the supply chain, the supply of critical minerals from nations like Argentina, Chile, Australia, and select other African countries. Okay, so because China dominates the rare earth production, controlling about 70% of global output, India that therefore seeks to establish itself in the lithium value chain. Okay, so the next topic is Clause 6 of Assam Accord. This topic is important for your polity and your governance section. So after a meeting with all Assam Students Union, the CM of Assam has initiated the process to implement 52 recommendations from the Justice Biplab Sharma Committee concerning the Clause 6 of the Assam Accord. So the 15 recommendations which require constitutional amendments will not be implemented for now, of course, because the state has no say in it. It would require the parliament's approval. So, what is the background of Assam Accords? So, there was a memorandum of settlement which was signed between Rajiv Gandhi government and all Assam Students Union, and this accord basically ended the 6 year long agitation which was against the entry of Bangladeshi migrants into Assam, and this agreement was signed in 1985, which marked the conclusion of the Assam movement. So, what is this clause 6 of this Assam Accord? So, it promises to provide constitutional, legislative, and administrative safeguards to protect, preserve, and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of Assamese people. And these safeguards aim to ensure that the concerns regarding the state's demographic and cultural integrity amidst the influx of migrants. So, what is this Biplab Sharma committee then? So in July 2019, the Union Home Ministry formed this 14-member committee chaired by the retired Assam High Court Justice Biplab Kumar Sharma, and the aim was to provide recommendations on implementing the Clause 6 of the Assam Accord. Okay, so the key issue that the committee was addressing was defining who are these Assamese people who will be eligible for the safeguards under Clause 6. So the committee submitted its report in February 2020, and it defined the Assamese people as those who are the indigenous tribals, the indigenous communities of Assam, Indian citizens who were residing in Assam before 1951 and their descendants, the indigenous Assamese people. So based upon this definition, the committee recommended reservations for Assamese people in the parliament, state assembly, local bodies and jobs. Okay. So there were total 67 recommendations which were divided into three categories. 40 recommendations were under the state government jurisdiction, 12 were under the concurrent list, and that 15 recommendations were exclusively within the domain of central government. So Assam government has accepted the 1951 cut-off date for specific recommendations. There are also recommendations regarding land safeguards, where only Assamese people would be able to own and transfer their land. These would be certain special revenue circles. A 3-year program to grant land titles to Assamese people will also be there. There will be survey of riverine regions also. Okay, so with respect to the language, retaining Assamese as the official state language would be done under the 1960 Assam Official Language Act. Bilingual government documents will be made so that all state government acts, rules and orders will be there in both Assamese and English. There will be a council which would be established to preserve and promote indigenous languages of Assam, and Assamese would be made a compulsory subject in all English medium schools. Okay, so for the cultural preservation, satras, that is the neo-Vaishnavite monasteries, for the preservation of them, an autonomous body would be established to oversee the development of satras, and
Multi-purpose cultural complexes would be developed in every district to preserve the cultural heritage of all ethnic groups. With respect to the autonomous councils, they would these sixth schedule areas of the Assam would decide whether they would want to implement those 52 recommendations or not. Okay, certain recommendations like the inner line permit for entry into Assam, like on the basis of that ILP regime that exists in Nagaland, Arunachal, Manipur, and Mizoram has not yet been accepted. Similarly, the reservation in government jobs for Assamese people has not also been accepted as of now, because this also pertains to the central government's jurisdiction. Okay. So the next topic is Women in Space Leadership Program. This topic is important for your science and tech section and your social issues. So Women in Space Leadership Program was launched by the Department of Science and Technology in collaboration with British Council as part of the UK-India Education and Research Initiative. The initiative aims to develop women's leadership framework to support institutions in strengthening their gender inclusive practices and policies. It also aims to foster women's leadership in space sciences by developing a strategic leadership framework. So the aim is to promote equitable distribution of leadership opportunities and enable the workplace culture which recognizes female leaders as well. Okay. So what is UK India Education and Research Initiative? So it is the flagship bilateral collaboration program on education and research, which was founded in 2006, and it has been implemented in three phases from 2006 to 2022. The fourth phase of this project was launched in 2023, and it aims to strengthen the bilateral relationship between both sides in areas of education, research, and innovation. So the next topic is infrasound. This topic is important for your science and tech section. So Comprehensive Test Ban Treaty Organization is holding workshop for scientists on using infrasound in the coming months. So what is infrasound? It refers to the sound waves which have very low frequencies. It can be produced by a passing meteor, a storm, an aurora up the north, volcanoes, earthquakes, or even nuclear explosions. So infrasonic waves can cause minute changes in the atmospheric pressure, which can be measured by microbarometers. So these noiseless sounds can travel very long distances without losing steam. Okay, so CTBTO's international monitoring system will use a range of technologies to detect nuclear explosions as well. Okay, so what are the applications of infrasound? So these can be used to check the structural health of buildings, dams, or bridges. Okay, because these infrasonic waves can pass through dense materials and even reveal internal stress, cracks, or other defects. In the field of aerospace, these infrasounds can check the stress or behavior of a rocket and also detect aerodynamics instabilities of an aircraft. In mining also, this infrasound can help in checking the integrity of mine shafts and determine whether a dynamite blast was successful or not. This sound can also be used to detect wildlife tracking, and it can be helpful in monitoring the movement of whales as well. Okay. So the next topic is Unified Logistics Interface Platform. This topic is important for your economy section. So NICDC Logistics Data Services Limited has announced the launch of Unified Logistics Interface Platform Hackathon 2. This is a competitive event which will foster innovation and develop digital solutions to tackle the pressing challenges of the logistics industry. So this will basically invite developers, startups, and industry players to come together and address the key challenges of the logistics industry, like sustainability, complex supply chain processes, unified documentation, and multi-modal logistics optimization. So what is ULIP? So it's a digital gateway which allows the industry players to access logistics related data sets from various government departments. So the aim is to create a nationwide single window logistics platform for end-to-end visibility by integrating information which is available with various government agencies across the value chain. Okay, so this will basically give direct and indirect benefit to all logistics stakeholders, and it will also enable structured planning by helping decision makers to on optimum use of modes of logistics through this ULIP, and it will thereby save cost and time. Okay.
So the next topic is Asia Power Index. This topic is important for your international relations. So India has been ranked third in the annual Asia Power Index, which is released by Australian think tank called the Lowy Institute since 2018, and it evaluates 27 countries across the Asia Pacific on two determinants. First is the resource based, and the second is the influence based determinant. So in resource based determinants, GDP at PPP level, conventional military strength, the capacity to deter threats to state stability, forecast for the future distribution of resources. So these determinants are used. In terms of influence based determinants, economic relationship, how a state can have the capacity to exercise leverage through trade, investment, economic diplomacy, the strength of alliances and partnerships, the extent of a country's diplomatic outreach, or its ability to shape international public opinion. All this is counted before making this index. Okay. So the next topic is Taiwan Strait. This topic is important for your international relations. So a Japanese warship has cruised for the first time to assert its freedom of navigation through the Taiwan Strait. So Taiwan Strait is also called the Formosa Strait, which separates the island of Taiwan and continental Asia. So the biggest islands along the Taiwan side include Penghu, Xiamen, and Pingtan. So Taiwan Strait constitutes a critical corridor which connects the South China Sea to the East China Sea. Okay, it is also one of the most important fishing grounds in China, and more than 100 economically important fish species are found here. So what is a strait? So a strait is basically a narrow body of water which connects two larger bodies of water. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.